Hello students, I am Daljit Kaur, lecturer chemistry from Meritorious School Mohali। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਔਰ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ from chemical reaction, and this chemical reaction is what? This chemical reaction already we are discussing in the +1. These reactions are redox reactions, oxidation reduction reactions, from where energy is produced and this energy is converted into electrical energy. This chemical energy is converted to electrical energy by the device which is called electrochemical cell or galvanic cell, or we can also call it as voltaic cell. So students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਪਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼, the arrangement consists of two beakers, one of which contains 1 molar zinc sulfate solution and other is having 1 molar copper sulfate solution. These are the solutions and these are the two electrodes. Here zinc rod is dipped in the zinc sulfate solution and copper rod is dipped in the copper sulfate solution. And here zinc is acting as a anode and this copper is acting as a cathode. Now in this case this is a U-tube, inverted U-tube, which is we can say it as salt bridge. ਤੇ ਇਹ salt bridge ਦੇ function ਵੀ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। This salt bridge complete the cell circuit and secondly it helps to maintain the electrical neutrality of the half cell solutions. Now what is the working of this electrochemical cell is, here anode is zinc, so at anode we know that there is a oxidation. So anode ਤੇ oxidation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ oxidation ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, zinc will dissociate to give Zn2 positive ion and 2 electrons. These 2 electrons moves by this path towards cathode side and Zn2 positive ions remains in the solution. And here in this case there is copper metal rod which is called as a cathode, and here what is going on, here is reduction occurs. Reduction, that is gain of electrons. So reduction de naal ki hoega, here in the solution we have copper sulfate as a electrolyte. So copper sulfate is already dissociated into copper 2 positive ion and SO4 2 negative sulfate ions. So the copper 2 positive ion already present in this solution will gain 2 electrons, come from this side and change to copper solid. This copper solid metal is getting deposited on this electrode. Now on this process there is the degradation or dissolving of the anode and there is deposition of this copper which is at the cathode side. Now on working of this electrochemical cell, here is Zn2 positive ions, the number of Zn2 positive ions increases, whereas in this side copper 2 positive ions are used up and the number is decreases. So there is electrical imbalance. So to balance the electrical neutrality of the half cell solutions, the salt bridge electrolytes like KCl, KNO3, they are present in the salt bridge, they are move out to balance the electrochemical cell half reactions, half solutions. So this is the working of your electrochemical cell, and by this the current is producing here. This is the device which is called the galvanic cell or electrochemical cell. Now how we represent the electrochemical cell or galvanic cell is, what is the representation of this? Representation of this cell is, we can say here from the left side always there is left side ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਕਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਐਨੋਡ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਐਨੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
इलैक्ट्रोलाइट के अंदर, एनोडिक इलैक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। और जो इलैक्ट्रॉन सीगे वो किधर चले गए, पास फ्लो होके टूवर्ड्स आ रिडक्शन जिथे हो रही है कैथोड साइड। और इस जगह ते कैथोड इलैक्ट्रोलाइट दे विच ऑलरेडी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सीगे जिन्हां ने इलैक्ट्रॉन गेन करके की कर लिया, कॉपर एनोड दिस इहदे च कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉरी इट्स इज कैथोड आएगा, सो कॉपर कैथोड च कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस हेयर इज रिडक्शन अकर्स, हेयर इज ऑक्सीडेशन अकर्स। सो वी ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫॉर ਆਰ ਮੈਮਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ और जो लैफ्ट एल तो स्टार्ट होंदा है अल्फाबैटिकली एल पहले आंदा है तो इनू असी पहले लिखना है। राइट दे साइड ते अगर आर बाद च आंदा है, एनोड च ए पहले आंदा है इधर लिखांगे, कैथोड च सी बाद च आंदा है इधर लिखांगे। सो साडी मैमरी दे लिए ऑक्सीडेशन ओ इधर आएगा तो ऑक्सीडेशन लैफ्ट साइड ते रिडक्शन इधर। या एक होर टर्म दे नाल मैं दसदी भी हुंदी हां कि आपां लोन याद रख सकते हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾइंड कर सकते हैं कि लैफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड ते नैगेटिव चार्ज हमेशा किधर होणगे एक साइड ते और दूसरी साइड ते होएगा। तो ये सीगा रजे तुहाडा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। नैक्सट जिहड़ा हैगा ਇਹ कुछ सैल दिते हुए हैं जिहड़े कि सिमिलरली रिप्रजेंट किए हुए हैं। सैल नूं असीं किवें लिख रहे हैं, जिहड़ा जिस सैल की ऑक्सीडेशन हो रही है उन्होंने जिससे लिखांगे कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर सॉल्ट ब्रिज, उस तो बाद जो रिडक्शन हो रही है तो एजी पॉजिटिव आयन है, रिड्यूस हो रहा है फिर ओब्लीक एजी सॉलिड। सिमिलरली अदर इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की रिप्रजेंटेशन भी तुहानूं इत्थे दिखाई जा रही है। सो तुसीं इन्हां नूं बेटा रिवाइज कर लेना, ठीक है। नैक्सट असीं इन्हां दे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ते EMF ऑफ द सैल के बारे गल करांगे।